Now digestive system. So what are the different parts of digestive system and what is the function of digestive system, that will be discussed in this session. So first of all, what is meant by digestive system? So whatever you are eating, whatever you are engulfing that nutrition, okay, so that is broken down into smaller particles. Okay, whatever you are eating, okay, that is broken down into smaller particle, because whatever you are eating, that is not a that form is not suitable for absorption of that active present in the your meal. Okay, so you are eating meal in the solid form, okay, and that is not absorbable in the blood, so it has to be digested. Okay, it has to be broken down. So for that purpose you have a digestive system. Suppose that you are eating a one roti. That roti is, firstly it is broken down into small pieces in the mouth cavity by chewing and mastication. After that, that bolus is going to your stomach. Okay, in the stomach it is acidified. Okay, it is acidified and broken down. Okay, again in the intestine it is again basified and broken down to release its active small nutrients like glucose and all that. Okay, after that they are absorbed from the intestine and all that into blood. Okay, so that is the digestive system. The purpose of digestive system is the to break down the whatever solid meals you are eating. What are the different organs of digestive system? Okay, so it will start from mouth, then salivary gland, then esophagus, then your stomach, then intestine, then stomach, then small intestine, then large intestine, and supportive organ or accessory organ. Supportive organ or accessory organ of digestive system, those are nothing but your liver, then spleen, then gallbladder and pancreas. Okay, these four organs are the supporting organ to the digestive system or accessory organ to the digestive system. So what is the main organ of digestive system? That is nothing but your mouth, salivary gland, esophagus, then mouth, esophagus, stomach, then small intestine, large intestine. These are the main organ of your digestive system. And supplementary or supportive organs or accessory organs, these are nothing but the salivary glands, then liver, then pancreas, then your gallbladder. Okay, then your uh, yeah, these kind of organs are the supplementary organs. So now, so we'll see one by one what is the important points from one by one. Now first is the functions of digestive system. What are the different functions of digestive system, कि उसका रोल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है बॉडी में. सो व्हाट इज रोल? सो इंजेशन मतलब खाना, जो भी आप whatever you food you are taking into in the body, that is in a alimentary canal. That foods are going in alimentary canal. So taking of food into alimentary canal. So what is the alimentary canal? So alimentary canal is nothing but the a it is nothing but the I think it is nothing but the it will range from mouth to your rectum. So whatever the you can say it is just a like a pipe. So whatever a pipe of smooth muscle from your mouth, rectum, that is nothing but the alimentary canal or alimentary tract, or it is also known as GIT, gastrointestinal tract, right? So that is the ingestion. Function of digestive system is ingestion. Then next one is a propulsion. So whatever you are ingesting through a mouth, okay, eating and drinking, so that will be propulsion means mixing up food, and that food will move along with the GIT. The content will move along with the alimentary tract, that is GIT. That is nothing but the propulsion. Then digestion. Third function is digestion. So digestion means what? Digestion has a two aspect. First aspect is a mechanical digestion, and second is a chemical digestion. Okay, so what is mechanical digestion? So breakdown of solid food into smaller pieces by chewing or mastication. So mastication means breaking down of food particle into smaller particle by mouth cavity using teeth. That is known as a mastication. ये एक बार क्वेश्चन आया था उसके ऊपर. Okay, so chewing or mastication, these are the synonyms.
So breaking down of mechanical breakdown of food in the mouth cavity is known as. So there was options, and one of the option was mastication. So mastication is nothing but the breaking down of food mechanically in the mouth cavity. Then this is the mechanical digestion. What is chemical digestion? So whatever the enzymes, those are secreted in the various parts of alimentary canal. Chemical digestion of food takes place in the alimentary canal, in the stomach, in the intestine. They are broken down again into smaller particle. They are broken down into again into smaller particle by intestinal fluid or gastrointestinal fluid. Okay, so gastric juice is there, intestinal juice is there, pancreatic juice is there. So whatever chemical digestion, that is a breakdown of a large molecule. For example, you are taking carbohydrate, you are taking proteins, you are taking lipids, you are taking vitamins. So to break down those kind of stuff, so you need enzymes, and there's those kind of enzymes are present in the juice, present in the stomach, then intestine and all that, pancreas. So that is nothing but the chemical digestion. Okay, now absorption. So whatever you have digested mechanically and chemically, now you are freed. Okay, so you are eating a sugar is nothing, for take an example of sugar. So you are eating a sugar or starch. आप रोटी खाते हो मतलब क्या खाते हो, स्टार्च खाते हो. Now that starch will be broken down into uh, broken down into smaller particle. जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में उसके बाद. ठीक है, सो फाइनली इज ग्लूकोज. नाउ दैट ग्लूकोज विल बी एब्सॉर्ब्ड. सो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड लिम्फ ऑफ द बॉडी to need the body's requirement, that is nothing but the absorption. Now next function of digestive system is elimination. So whatever is undigested food or undigested food, जो भी undigested food है और जो भी useless food है, that will be removed from the body, that is nothing but the elimination via rectum. So now alimentary canal. So whatever alimentary canal is there right from your esophagus to your anal, your rectum. So that will be covered into that will be composed of 3 layers of tissue. Okay, so outer layer will be known as a serosa. Outer layer is serosa. Then middle layer is a muscular layer. Then inner layer is after muscular layer there is a mucosal layer, and last is a mucosal lining. Now in this mucosal lining there are numerous type of tissue, like epithelial cell, columnar epithelial cells are there. Okay, so columnar epithelial cells are there in the mucosal lining, which has a secretory function. Okay, जो cells होते हैं वहाँ पे mucosal lining में वो secrete भी करते हैं, absorb भी करते हैं, कुछ secretion भी करते हैं. तो mucosa मतलब यहाँ पे mucous secretion होगा. Okay, muscular muscle layer मतलब इसमें 2 types of muscles आते हैं, circular muscles and strip of straight muscles. ये मसल कॉन्टैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, टू प्रोपेल द फूड. ओके, सो ये एलिमेंट्री कैनाल में ये सब कॉमन होगा. ये 3 लेयर होते हैं उसमें टिश्यू की. ठीक है, मतलब स्टमक में थोड़ा सा अलग होगा, इंटेस्टाइन में थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये कॉमन है चीज. ओके, सो आउटर कवरिंग इज नोन एज अ सेरोसा. देन मिडल लेयर इज नोन एज muscle layer. Then after that muscle layer there is a mucous layer, and lastly a mucosal lining. So it will be a common for alimentary canal right from stomach to your rectum. The organs which are covered in the abdomen cavity, that is by serous membrane. Okay, so whatever organs of digestive system are there and other organs of digestive system are there, they are covered in the abdominal cavity by a serous membrane known as a peritoneum. ये peritoneum होता है, और peritoneum होता है, it is a outer covering on the delicate organ of alimentary tract. जैसे आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, कि ऐसा नहीं कि वो सब वही पे वैसे ही है, उनके ऊपर एक कवरिंग होता है, that is known as a serous membrane covering and known as a peritoneum. So abdominal wall is lined by parietal peritoneum, okay, and visceral peritoneum covers the organ in the abdominal and pelvic cavities. Okay, so whatever abdominal cavity is there and pelvic cavity is there, that is covered by a one protective covering known as a peritoneum. That is it. Peritoneum का 2 पार्ट होता है, parietal peritoneum and visceral peritoneum. parietal जो होता है वो अपर पार्ट है,
जैसे थोरेसिक केज के अंदर तो वो पैराइटल पेरिटोनियम होता है, और थोरेसिक केज के नीचे जो होता है वो विसरल पेरिटोनियम होता है. That will cover the organ in the abdominal as well as pelvic region. Okay. Now this peritoneum has some fluid known as a serous fluid. Okay, serous fluid that will again it will has a different function to absorb shock, mechanical protection and all that. ये बाकी का जो है वो आप पढ़ लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं. बस इतना याद रखो कि so digestive organs are covered by peritoneum. Now what is peristalsis? Peristalsis means movement of food bolus from your esophagus to your rectum. So that is done in the alimentary tract. That is known as a peristalsis. So movement of food within the gastrointestinal tract. That is by the rhythmic contraction and relaxation of smooth muscle present in the GIT. That is nothing but the peristalsis. Okay. So that the food bolus is propelled forward. कि मान लीजिए कि यहाँ पे इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फूड बोलस है, तो फूड बोलस क्या होगा, प्रोपेल होगा आगे आगे. जैसे बोलस के पीछे का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे का रिलैक्स होगा. इस तरीके से वो बोलस मतलब जो भी खाना खाया आपने खाने का वो आगे आगे जाता जाता रहेगा. दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस. नाउ दिस GIT is supplied by two kind of nerves. So first one is a sympathetic nerve and second one is a parasympathetic nerve. So mostly alimentary canal जो है आपका digestive system जो है वो mostly supplied है parasympathetic nervous systems. Okay, so parasympathetic vagus nerve is there. So vagus is a largest nerve. It is a large it is a vagus nerve is the largest nerve that is supplied to your GIT. Okay, so it is a parasympathetic in nature, means here neurotransmitter will be acetylcholine. Okay, so parasympathetic vagus nerve is supplied to alimentary canal and accessory organs. Sympathetic nervous system is also there, so known as sympathetic plexus or ganglia in the thorax. Okay, so sympathetic plexus present or ganglia present in the thorax, so that will originate from your cervical vertebra and your thoracic vertebra. जो भी sympathetic nerve है वो भी supplied होता है. Abdominal and pelvic from which nerve passes to alimentary canal. So sympathetic plexus in thorax region is also there. So thorax इस sympathetic nervous system का बहुत ही complex होता है इसमें, लेकिन उतना रोल नहीं है उसका GIT में. So mostly parasympathetic nervous system has a major role in the digestion and all that. Now what is the effect of parasympathetic nervous system on digestion? So parasympathetic stimulation will increase the rhythmic contraction, will increase the peristalsis, will increase the secretion of GIT. Okay, so it will increase the secretion of acid in the stomach, it will increase the secretion of pancreas, it will increase the secretion of intestinal juice, etc. etc. In contrast to that, जो sympathetic nervous system होता है that will decrease. Okay, parasympathetic nervous system will increase the peristalsis movement, will increase the secretions. Sympathetic will decrease the पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड सिक्रेशन. मान लीजिए कि आप भाग रहे हो, तो भाग रहे हो मतलब उस टाइम पे आपको डिफिकेशन नहीं होगा, उस टाइम पे आपको टॉयलेट जाने का सोचेगा नहीं. जब आप घर में बैठे हो तभी आप टॉयलेट में जाओगे, जब मतलब रिलैक्स हो तब. ठीक है, जब आप भाग रहे हो तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, आपका मुंह ड्राई हो जाएगा. सो जब आप भाग रहे होते हो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब आप रिलैक्स बैठे हो तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. So parasympathetic nervous system has a stimulatory role in the digestive system. Just remember. Now next is a parts of digestive system. What is the important part? So mouth आपको तो मालूम है. Mouth is a cavity consists of mouth cavity anteriorly consists of lips. Posteriorly it is continuous with the larynx and laterally by muscles of cheeks. कि माउथ कैविटी क्या है कि माउथ कैविटी स्टार्ट होता है आपके लिप से, सामने उसकी क्या है लिप से, पीछे क्या है माउथ कैविटी के लैरिंग्स है, और साइड में क्या है चिक्स मसल है जो आपके चिक्स है. ठीक है, दैट इज अ माउथ कैविटी. नाउ टंग, व्हाट इज टंग? टंग इज अ मस्कुलर टिश्यू. टंग इज अ मस्कुलर टिश्यू व्हिच इज अ वॉलंटरी. ओके, यू कैन टर्न. आप देखो, आप जिप इधर उधर कर सकते हो, जिप टेढ़ी कर सकते हो, कैसे जब जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो. तो इट इज अ मस्कुलर टिश्यू व्हिच इज अ वॉलंटरी इन नेचर. टंग इज प्रेजेंट इन द माउथ. अभी उसका लोकेशन क्या है, उसका सपोर्टिंग बोन क्या है, वो सब बाद में पढ़ लेना, या फिर
that will be discussed in the skeletal system. Now tongue of mouth consists of numerous papillae. Now what is papillae? Papillae is nothing but the sense organ, okay, or taste buds. Now papillae is nothing but the sense organ or taste buds. So numerous papillae are present in the tongue, which will act as a sensory receptor for taste, or they are taste bud. Then, so in the tongue there is one nerve known as a hypoglossal nerve. The nerve supplied to a tongue, that is nothing but the hypoglossal nerve, facial nerve, and glossopharyngeal nerve. Hypoglossal nerve, glossopharyngeal nerve, and facial nerve, they are supplied to a tongue. तो आप जब जैसे होता है ना, आप जैसे कोई आपके मुंह में खाना, मतलब एक मान लीजिए कि आपके मुंह में एक पानी पूरी गया, तो आपको एक टेस्ट मिलता है. सो दैट टेस्ट इज बिकॉज ऑफ दिस सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट ओवर द योर टंग, दैट इज टेस्ट बड, दैट इज नथिंग बट द papillae. Okay, now again this in the mouth cavity you have a saliva. In the mouth cavity you have saliva, that is a salivary juice. Okay, so that saliva consists of different enzymes in the for the digestion. So digestive enzyme taline. Taline means it is a salivary amylase. Remember, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2 बार, so you have to remember. So there is one enzyme known as a taline. So P silent taline. Okay, so taline is the carbohydrate digesting enzyme. It is a salivary amylase. Okay, it is a salivary amylase which will break down the carbohydrates. मान लीजिए आपने कोई चपाती खाया, गरम गरम चपाती है आपके, आपने खाया और 5 मिनट तक वो चपाती को चबाते रहो, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट ही आपके मुंह में चपाती को चबाते रहो. So you will get a sweet taste because of digestion of that starch by salivary amylase. So it was question in GPAT 18 and also it was in question in previous exams. Okay, so taline is a salivary amylase present in the saliva. Okay, so digestion of carbohydrate start itself from the mouth. Remember, digestion of carbohydrate will start from mouth itself. ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जब आपके पेट में जाएगा तब उसका डाइजेशन होगा, आपके माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू होता है. Then again, along with this salivary amylase, it has a different mineral salts, mucus, immunoglobulins, then enzyme known as a lysozyme. Other component of saliva, they are the other component of saliva. Salivary lipase is also there, but it is very in small extent. Then what is the pH of saliva? 5.8 to 7.4. Remember, pH of saliva. Then why there is a such pH? Because this taline, salivary amylase has an optimum pH of 6.8. ठीक है, इसका pH ये लगता है वर्किंग करने के लिए. ऑप्टिमम pH टू वर्क फॉर टैलिन इज नथिंग बट 6.8. मतलब 6.8 pH जब होगा तभी टैलिन एक्टिव रहेगा, तभी टैलिन डाइजेस्ट कर पाएगा किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को. सो ऑप्टिमम pH फॉर टैलिन इज 6.8 एंड एट द ऑप्टिमम pH दिस टैलिन विल बी एक्टिव एंड इट विल डाइजेस्ट योर कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ इटसेल्फ. सो सलाइवरी pH याद रखो. And along with this, saliva also consists of urea, then uric acid and hemoglobin A. Now what is the function of mouth cavity? So function of mouth cavity is nothing but the chewing. Chewing is also known as mastication. There is a mechanically breakdown of large pieces of food into small pieces. Then another is swallowing. Swallowing is also known as deglutition. Deglutition is also known as swallowing. So remember, mastication is nothing but the chewing, deglutition is nothing but the swallowing. Again, the mouth also has a function of speech. कि आप बात करते हो, कैसे बात करते हो? माउथ से ही करते हो ना, कि अलग कोई आपके पास ऑर्गन नहीं बात करने के लिए. जैसे मैं माउथ से बात कर रहा हूँ, आपका पास कोई अलग ऑर्गन है क्या? माउथ नहीं, माउथ से. ओके, chewing और mastication और deglutition और swelling और and speech, that is the function of mouth cavity. This saliva is secreted by salivary glands. ये जो saliva होता है वो secrete किया जाता है salivary gland से. और salivary gland क्या होता है? There are 3 pairs of salivary gland. So first is nothing but the parotid gland, then second one is submandibular gland, and third one is a sublingual gland. भाई इसका लोकेशन क्या होता है? ये parotid gland जो होता है, it is salivary gland and it is a major salivary gland, larger salivary gland. ये तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ा होता है पैराटाइड ग्लैंड, एंड इट इज प्रेजेंट इन जस्ट बिलो योर ईयर. कि आप यहाँ पे हाथ रखेंगे ईयर के नीचे, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे पैराटाइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है.
दो साइड से पैराटाइड ग्लैंड था, and it will secrete a saliva. Then again there is another known as submandibular gland. Submandibular यहाँ पे होता है नीचे से, sublingual gland होता है यहाँ पे cheeks में. ये तीनों भी saliva secrete करते हैं, ठीक है. So they will release or they will secrete the saliva in the mouth, but most of the saliva will be secreted. 70% saliva, sorry, 62% saliva will be secreted by submandibular glands. Parasympathetic stimulation will increase the saliva. Parasympathetic stimulation will increase the secretion of saliva. Sympathetic stimulation will decrease the secretion of saliva. या आप जब घर पे बैठे हो तो आपका सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ जाएगा. जब आप भाग रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो तो आपका सलाइवरी सिक्रेशन नहीं हुआ, बिकॉज जब आप भाग रहे हो, काम कर रहे हो, तब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. और जब आप रिलैक्स बैठे हो घर पे, कुछ टेंशन नहीं है, तब आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन एंड सिंपैथेटिक विल डिक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन. इतना याद रखो, जीआईटी में जो भी काम हो रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करेगा. अभी क्या काम है जीआईटी का आपको मालूम है? डाइजेशन, propulsion of bolus from mouth to esophagus to small intestine, large intestine, stomach, etc. etc. Digestive juices secrete करना, that will be increased by parasympathetic nervous system and that will be decreased by sympathetic nervous system. These two works in the coordination. Okay. Now next one is the teeth. Next one is the teeth. Next organ for digestive system is the teeth. Okay. So teeth आपको मालूम है, दांत. आपको तो बहुत आदत होगी दांत दिखाने की. So teeth. So they are embedded in the sockets of alveolar ridges of the mandible and maxilla. So mandible and maxilla जो होता है उसके जो कैविटी होते हैं वहाँ पे उसको एम्बेड किया जाता है टीथ को. सो अपर टीथ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, उसमें वो maxilla and mandible. Mandible is nothing but the upper jaw, maxilla is nothing but the lower jaw. Okay, so the sockets, they are present in the sockets of maxilla and mandible teeth. Now जो बच्चे होते हैं, बेबीज आर बोर्न विद द टू सेट्स ऑफ टीथ. सो जो बच्चे होते हैं उनमें दो तरह के दांत होते हैं. एक तो होते टेम्पररी दांत और दूसरे होते हैं परमानेंट दांत. ठीक है. सो बेबीज आर बोर्न विद द टू सेट्स ऑफ टीथ. सो फर्स्ट वन इज अ टेम्पररी टीथ. टेम्पररी टीथ मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज अ deciduous teeth, or they are known as a temporary teeth. Deciduous teeth or temporary teeth, or they are also known as a milk teeth. Okay, so जो बच्चे होते हैं उनके पास जो टेम्पररी टीथ होते हैं तो वो टेम्पररी होते हैं, उनको दूध के दांत बोलते हैं, है ना, दूध के दांत. और इट इज ऑल्सो नोन एज deciduous teeth. deciduous teeth ये एक बार पूछा था आई थिंक क्वेश्चन. deciduous teeth, how many number of deciduous teeth are present in the children's kids? So there are 10 teeth. Yeah, there are 20 temporary teeth. ये 20 दांत होते हैं बच्चों में जो कि टेम्पररी होते हैं. ये एक अपर जॉ में होता है 10, लोअर जॉ में होता है 10. ठीक है. सो देर आर 20 टेम्पररी टीथ और deciduous teeth in the children's, so which will be removed at the age of 6. जैसे ही बच्चे होते हैं उनमें दो तरह के दांत होते हैं, एक होते हैं परमानेंट टीथ और एक होते हैं टेम्पररी टीथ. टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो 10 अपर जॉ में होते हैं, 10 लोअर जॉ में होते हैं. जो बच्चा जैसे 6 साल का हो जाता है तो उसके जो टेम्पररी टीथ है वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं. होता है ना, बच्चों के दांत गिर रहे हैं, अभी नए दांत हो गए. ठीक है, वैसा. सो टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? हाउ मेनी deciduous teeth are present in the children? These are nothing but 20. So 10 upper jaw, 10 lower jaw. Is that clear? याद रखो. Which will become erupt at about the 6 month of age of child. कि 6 महीने का बच्चा होगा तो तब वो दांत आना चालू हो जाएंगे और 5-6 साल के एज में वो रिमूव हो जाएंगे. उसके बाद में क्या होता है? So deciduous teeth are replaced by permanent teeth when a child is of 6 years. 6 साल का जब बच्चा होता है उसका जो दूध के दांत है वो गिर जाते हैं और नए परमानेंट दांत उसको आ जाते हैं. नाउ परमानेंट टीथ, हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर? देयर आर 32. सो deciduous teeth are only 20 and permanent teeth are 30. So depending upon the shapes of teeth, there are different classes of teeth present and they are different
functions. So there are incisors, जो सामने वाले दो दांत होते हैं आपके, उसको इंसिजर बोलते हैं. So incisors, they are incisors and canine. So these incisors are mostly used for breaking down the जैसे आप खाते हो ना कुछ भी, उसको ब्रेक करने के लिए, कट करने के लिए इंसिजर्स यूज होते हैं दांत. ठीक है. उसके बाद कैनाइन होते हैं. कैनाइन मतलब जो काटने के लिए दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं. कैनाइन एंड इंसिजर, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. ओके. देन ऑफ, ओके, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसिंग ऑफ फूड. मतलब आपने अगर इतना बड़ा पिज्जा का टुकड़ा लिया है, you have taken a piece of pizza, so you have to break that piece of pizza, so you are using your incisors and canine. After that, there are premolar and molar teeth, which are known as a grinding teeth. Okay, chewing the food. So these are, there was once a question, which teeth are used for grinding the food. So that is nothing but the molar and premolar teeth. Molars and premolar teeth, they are used for the grinding of food. ओके, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन था. ओके, सो रिमेंबर दिस मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या पूछते हैं इसमें, का ही पूछेंगे. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. सो अगेन सलाइवा विल हैव 99.5% वाटर and only 5% of solid. Now that solid is again divided into organic substances, inorganic substances and gases. So in case of organic substances, you will have different enzyme in the saliva, like amylase. Amylase, it will break down the carbohydrate, or it is also known as taline, salivary amylase. इसके ऊपर एक क्वेश्चन था. उसके बाद again you will have maltase in your saliva. Maltase will break down the maltose. Okay. Then salivary lipase is there, or lignal lipase, it will break down the lipids. Lysozymes are there, phosphatase are there, it will break down the phosphoric acid. Carbonic anhydrase is there, then calcarine is there. So these are the enzymes present in the saliva. Again, organic substances like mucin, albumin, protein-rich protein, lactoferrin, immunoglobulin A, blood group antigen, and other proteins like protein substances like urea, uric acid, creatinine, xanthin, icosatin. Inorganic salts like sodium, calcium, potassium, bicarbonate, bromide, fluoride, phosphatide, ये सब आयन होंगे उसमें. गैसेस होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ब्लड ग्लूकोज इज नॉट, नॉर्मली ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इन द सलाइवा. जो सलाइवा होता है आपका, उसमें ग्लूकोज इज नॉट अ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, in that case you might have a glucose in your saliva. So it is very important. Now next part of digestive system is a pharynx, then esophagus. Okay, so अपन one by one जा रहे हैं. अपने माउथ देखा अभी देखेंगे pharynx. So pharynx is nothing but the it will have three structure known as a nasopharynx, then oropharynx and laryngopharynx. So nasopharynx is important for respiration. Oropharynx and laryngopharynx, both of them have a passage for respiratory as well as digestive system. Then pharynx consists of 3 layers of tissue. ये छोड़ो. उसके बाद आता है आपका esophagus. Now esophagus is a 25 centimeter long tube originating from larynx, originating from pharynx to the it will continue up to stomach. Okay, so stomach आपके पेट को और आपके गले में जो आपका जो माउथ है उसको कौन कनेक्ट करता है, esophagus. So 25 centimeter long, 2 centimeter width or in diameter, a long tube. It will join pharynx to a stomach. Okay. Again, this esophagus will have two sphincters. The sphincter, okay, the sphincter close to upper and lower end of the esophagus. Okay. So upper sphincter will be cricopharyngeal or upper esophageal sphincter. Cricopharyngeal or upper esophageal sphincter. Now it is present just beginning of esophagus. Okay, so it will prevent air entering into a stomach. It will prevent a food particle entering into respiratory system. Okay, so which will prevent the air passage into esophagus during inspiration. जब आप सांस ले रहे हो तो सांस आपका लंग्स में जाना चाहिए, ना कि आपके जीआईटी में. तो वो स्फिंक्टर वहाँ पे काम करेगा. स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, आप इसको एक दरवाजा भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको एक पास ये बोल सकते हो. At the lower end of esophagus, there is another sphincter known as a cardiac sphincter or lower esophageal sphincter. Cardiac sphincter और lower esophageal sphincter. ये sphincter होता है just at the just beginning of your stomach. जैसे esophagus stomach को connect करता है, वो connection पे ये sphincter होता है, cardiac sphincter. अब ये क्या करेगा? So what is the role of cardiac sphincter? It will be open when you are eating. आप जब ईट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तब ये ओपन रहेगा.
लेकिन जैसे ही खाना आपके पेट में गया तो ये बंद हो जाएगा. So it will close the entry of esophagus after eating. So it will close. Okay. So this cardiac sphincter will prevent a reflux of acid from stomach to your esophagus. ये आपको होता है एसिडिटी होने के बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है रिफ्लक्स होता है, जो एसिड पेट में का है वो ऊपर आ जाता है खाने के बाद. ज्यादा खाना खाया आपने तो क्या होता है वो आपके ऊपर तक आ जाता है इसोफेगस में, या फिर आपके कभी गले तक आ जाता है. इतना इतना खाना क्यों खाते हो आप? ठीक है, इतना नहीं खाने का, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाने का. नॉर्मली ऐसा होता है कि एक रिसर्च हुआ था, अभी ये आई एम डिफरिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, बट एक रिसर्च हुआ था कि रिसर्च में बोला गया था कि उन्होंने कुछ नंबर ऑफ पीपल पे ऊपर रिसर्च किया था, और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था कि आदमी जो है, ह्यूमंस जो है, वो उनको 25% खाना ही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो खाते हैं 100%. मतलब यू आर ईटिंग 75% सरप्लस मील, उतना लगता ही नहीं. देखो आप जानवर, देखो आप कोई अगर कोई शेर है या फिर कोई लोमड़ी है, वो कितना खाना खाता है. जब उसको एक बार उसने शिकार किया, खाना खाया, तो 2-3 दिन खाना ही नहीं खाता. तो उसको जितना लगता है उतना ही खाता है. और ह्यूमंस क्या है, वो बहुत हावरे होते हैं, मतलब दे आर वेरी सेल्फिश. वो जितना आ जाओ, मतलब पेट शर्ट के बाहर आ रहा है फिर भी वो खाना ही खा रहे हैं. इसोफेगस इज ऑलमोस्ट एंटायरली thorax consisting 4 layers of tissue. ये इसोफेगस जो पूरा thorax होता है आपका, वो उसके वहां से होता है just in front of your trachea, and again this will have again 3 layer outer elastic fibrous tissue, then middle muscular layer, then stratified squamous epithelial cells will be there, and columnar epithelial cells will be there in the inner layer. Next part is the stomach. So now what is stomach? Stomach is nothing but the J-shaped dilated portion of the alimentary canal. ये एक फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा था. So J-shaped organ present in your thoracic cavity. It is nothing but the stomach. ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हो. Organ associated with the stomach. Stomach के साथ में कौन से organ होता है? So anteriorly में सामने क्या होगा? सामने से क्या होगा? So anteriorly there will be a lobe of liver, left lobe of liver present anterior to the stomach. Then posteriorly abdominal, aorta, pancreas, spleen, left kidney, ये आपके पेट के पीछे होगा. सामने क्या होगा? लिवर का लेफ्ट लोब होगा. ठीक है. देन पीछे क्या होगा? पैंक्रियास, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, एब्डोमिनल, aorta, adrenal gland. देन सुपीरियरली ऊपर क्या होगा? पेट के ऊपर होगा आपका डायफ्राम. So superiorly diaphragm will be there, esophagus will be there, and left lobe of liver. And inferiorly नीचे क्या होगा? पेट के नीचे के साइड पे, so transfer colon is there, transfer colon, small intestine, and to a left diaphragm, then spleen. So ये होगा organ associated with the stomach. आपके पेट के लेफ्ट साइड में होगा आपका स्प्लीन, आपके पेट के राइट साइड में होगा डिओडिनम. So it is organ associated with the stomach. It's not much important. Okay. Now what is important? Stomach is continuous with the esophagus. So esophagus के बाद stomach continue करता है at a cardiac sphincter. So stomach will join esophagus at a cardiac sphincter with the duodenum. ये एक spelling mistake है यहाँ पे, duodenum है. Okay. And to the pyloric sphincter. मतलब stomach के यहाँ पे आपका stomach esophagus को connect तो वहाँ पे होता है cardiac sphincter. और जहाँ पे आपका स्टमक डिओडियम मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्टमक एंड डिओडियम कनेक्ट होता है, वहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं. सो विच स्फिंक्टर विल प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन. सो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. एंड विच स्फिंक्टर विल प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ gastric content into esophagus. So that will cardiac sphincter. Remember. Okay. Now there are different part of your stomach. So the fundus is upper dome shaped part of your stomach, then body, and then pyrolus. Pyrolus is a lower portion of your stomach. These are the 3 region. Along with that, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो ग्रेटर कर्वेचर होगा, स्मॉलर कर्वेचर होगा, उसमें स्टमक में किस टाइप का टिश्यू होता है, 3 लेयर्स कौन सा होता है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर,
उसमें फोल्डिंग्स क्या होता है, ये सब आप पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हो, बट दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट इज कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस. That is the most important. Okay. Now content of gastric juice. What is content? So there is around 12 liters of gastric juice secreted daily in the stomach. कि 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस आपकी बॉडी में होता है. ठीक है. नाउ इट इज secreted by specialized secretory glands in the mucosa. Okay. Now gastric juice consists of water, mineral salt, mucus. Okay. So gastric juice has a hydrochloric acid. Okay. Hydrochloric acid, mucus, then mineral salts on the stomach surface. Okay. Hydrochloric acid, which is secreted by parietal cells of the stomach. Remember, hydrochloric acid is secreted by parietal cell of stomach. Okay. Parietal cells and globulate cell, there are two types of cell. Parietal cell क्या करेंगे, acid secrete करेंगे. Then again along with this pepsin will be secreted, along with this intrinsic factor will be secreted. So parietal cells will secrete intrinsic factor and hydrochloric acid. Remember, this line is very important. Then which is intrinsic factor is important for absorption of vitamin B12 from the stomach. Intrinsic factor क्या है, एक protein है, it is a glycoprotein. It is important for absorption of vitamin B12 because vitamin B12 is absorbed from active absorption. So it is absorbed by active process. Okay. So intrinsic factor is nothing but the carrier for. Okay. You remember. You have to remember this line. Hydrochloric acid secreted by parietal cell. Then intrinsic factor is also present in the stomach, which is important for absorption of vitamin B12. Intrinsic factor is secreted by gastric gland. Hydrochloric acid is secreted by parietal cells. Intrinsic factor is secreted by gastric gland. Remember. Then inactive enzyme precursor like pepsinogen. Pepsinogen is secreted by cheap cells in the gland. Okay, so there are three kind of cells present in the stomach: parietal cells, then gastric glands, and then cheap cells. So parietal cell will secrete HCl, then gastric gland will secrete intrinsic factor, then cheap cells will secrete a pepsinogen. Pepsinogen is inactive form. So after secretion in the acidic environment, pepsinogen is converted to pepsin, and now pepsin is a proteolytic enzyme. It will break down the proteins. Okay, this is the composition of gastric juice. Now the mucus is secreted by one type of cell known as a globulate cell. Mucus in the all everywhere. जो GIT का कैनल होता है आपका स्टमक इंटेस्टाइन पूरा, तो वहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, ग्लोबुलेट सेल. ग्लोबुलेट सेल होते हैं वहाँ पे आपके, it is present all over the lining of GIT, and that will secrete a mucus, and that mucus will prevent a mechanical damage. That mucus will prevent a GIT lining from mechanical damage from because of there is a movement of food in the GIT. Again, it will also act as a barrier. Mucus will act as a barrier between gastric acid and the stomach lining. So it will prevent the damage to the. So that is secreted by the globulate cell. यहाँ पे दिया नहीं मैंने लेकिन बोल रहा हूँ. Now functions of gastric juice. What is the function? So it will liquefy the food. It will acidify the food. Okay. After acidification, there will be stoppage of action of salivary amylase. Then acid will help to kill the microbes, ingested microbes. ठीक है, मतलब अगर आप कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड फूड है तो आप वो खा रहे हो, मतलब आप बीमार नहीं होगे, वो पेट में जाके मरने वाले बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब ऐसा कोई अगर क्लेम कर रहा है कि ही इज अ प्योर वेजिटेरियन, सो ही इज अ फॉल्स क्लेम. दैट क्लेम इज फॉल्स. कोई भी यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है ही नहीं. कोई ना कोई माइक्रोबियल ग्रोथ. आप कर्ड खाते हो, कर्ड इज व्हाट, लैक्टोबैसिलस. सो कर्ड इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया. सो यू आर ईटिंग नॉन वेज. अगर आप दही खा रहे हो तो that is a non-veg. Functions of gastric juice, that is the liquefaction of food. HCl will acidify the food, then it will kill the microbial if contamination is present. Then again acid environment will stop the action of taline. Then acid environment is important for pepsin because pepsinogen is activated in the acid environment. Pepsin is effectively mostly at pH 1.5 to 3.
और ये गैस्ट्रिक पीएच होता है। गैस्ट्रिक पीएच कितना होता है 1.5 to 4, ओके 1.5 to 4 गैस्ट्रिक एसिड का पीएच, गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.5 to 4, ये याद रखो। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, it will be activated in the gastric environment only, in the acidic environment only, so which is important for absorption of vitamin B12. And if there is a deficiency of your intrinsic factor, that will lead to deficiency of vitamin B12 and anemia. Then mucosa is secreted in the stomach, which will prevent the mechanical chemical injury from the acid environment. And also acid environment is also important for absorption of iron from stomach. Is that clear? समझ में आया आपको? Hello, are you getting or not? Now again, content of gastric juice. क्या content होता है gastric juice का? Quickly देखो. So gastric juice mostly consists of 99.95%, 99% water होता है उसमें, 0.5% solid होता है. अभी ये solid क्या क्या है? तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा. तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन. पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, रिमेंबर इट विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. देन रेनिन, रेनिन जो है इट इज आल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बट दिस रेनिन is present in the animals only. Then gastric lipase is there, gelatinase is there. Gelatinase means it will break down the gelatin, it will break down the protein. आप जो नॉन वेज खाते हो तो ये ब्रेक डाउन करता है. Then urease, okay, urease means it will break down the your nucleic acids. Then again, other organic substance like mucus intrinsic factor is also present in the gastric juice. So inorganic content present in the gastric juice, that is hydrochloric acid, then sodium, calcium, potassium, bicarbonate, chloride, phosphate. So this is a content of gastric juice. आपको याद करना चाहिए कंटेंट. जो रेनिन होता है वो, रेनिन जो होता है वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें ही होता है. नेक्स्ट वन इज हाउ एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक, कि एसिड सिक्रेशन कैसे होता है स्टमक में. ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है आई थिंक. सो देयर एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक बाय 2 फेजेस. एसिड जनरेशन होता है स्टमक में, कैसे होता है, किस फेजेस में होता है. देयर आर 2 फेजेस ऑफ एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक. ओके, सो फर्स्ट वन इज there are 3 phases of gastric acid secretion. Acid is secreted in the 3 steps in the stomach. Okay, first one is a cephalic phase, second one is a gastric phase, and third one is a intestinal phase. Okay. So first one is a cephalic phase, second one is a gastric phase, and third one is a intestinal phase. So acid is generated in the stomach and they are secreted in the GIT by these 3 phases. Okay, so cephalic phase क्या होता है? So what is cephalic phase? Suppose that you are sitting over here and in front of you there is one dish containing very good समोसा. कि आपके सामने समोसा रखा है तो आपके मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो कैसे होता है वो? सो cephalic phase is divided into 2 types, that is a conditional reflex and unconditional reflex. तो conditional reflex means what? अगर आपके सामने जलेबी समोसे रखा है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका सलेवरी सिक्रेशन हो जाएगा. कैसे? क्योंकि आपने वो समोसे देख लिए ना. सो साइड स्मेल, समोसे का स्मेल अच्छा आ रहा है और आपको भूख लगी और आपको थॉट आया आपके माइंड में, आप खाबों में ही देख रहे कि यार कितना अच्छा वो आप बिरयानी बनाए. तो बिरयानी बनाए मतलब आपको थॉट आया. सो वट एवर कंडीशंस आर देयर, साइट, स्मेल और थॉट एंड हियरिंग ऑफ फूड. अगर किसी कहाँ से आपको स्मेल आ गया, यार ये नेबर ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई यार, सो दैट विल लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, दैट विल लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस. These inputs, smell, sights, and hearing about the food, thinking about the food, okay, smell, that will stimulate the vagus nerve and that will increase the gastric acid secretion. So it is a conditional reflex in the cephalic phase. Now unconditional reflex means presence of food in the mouth. तो मान लीजिए आपने कुछ फूड के बारे में सोचा नहीं, स्मेल नहीं आया आपको, आपने देखा भी नहीं, लेकिन अचानक से किसी ने आपके मुंह के मतलब आपके मुंह में एक पानीपुरी डाल दिया. एक मुंह में अगर पानीपुरी डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपको स्टिमुलेट हो जाएगा वेगस नर्व एंड दैट विल इंक्रीज द gastric acid secretion. So it is a cephalic phase. Okay, then gastric phase is bolus in the stomach. कि मान लीजिए आपने खाना चालू किया, आपका खाना गया स्टमक में, 1 by 1 बोलस गया स्टमक में. सो स्टमक में कैसा है, स्टमक विल सिक्रेट
one enzyme known as gastrin. And also in the stomach there are local nerves, and again there is a vagus nerve in the stomach. So these three will again stimulate the gastric acid secretion. So that is known as a gastric phase. Then last one is the intestinal phase, and mostly it is a hormonal dependent. Okay, so for example chyme in the intestine. Chyme means क्या होता है, यहाँ पे ऊपर जो गैस्ट्रिक फेज है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने बोलस, यहाँ पे लिखा है चाइम, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फूड का स्मेल हो गए. अभी बोलस मतलब आपने खा लिया, पिज्जा खा लिया, चपा लिया, चपाने के बाद जो बोलस बनता है उसको बोलस बनते हैं. अभी चाइम क्या होता है, ये बोलस अभी पहले ही जाएगा आपके स्टमक में, वहाँ पे उसका लिक्विफिकेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा. नाउ व्हाट इज चाइम? चाइम मीन्स लिक्विड फूड. सो आपने जो खाया उसके उसका लिक्विड कंसिस्टेंसी बन गया, दैट इज चाइम. सो चाइम इन इंटेस्टाइन विल secretin, then cholecystokinin, then somatostatin, then this GIP and VIP. ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम. GIP छोड़ दो, ये secretin, somatostatin that will be secreted. In the intestine there also again gastrin will be secreted. Gastrin will stimulate the gastric acid secretion, okay, secretion of gastric juice. But these three, secretin, cholecystokinin, somatostatin, and these last, they will inhibit the gastric acid secretion. So this phase is nothing but the intestinal phase. Is that clear? There are three phases of gastric acid secretion. Gastric acid तीन phase में secrete होता है, cephalic phase, gastric phase, intestinal phase. Now next one is a small intestine. थोड़ा सा रह गया है, अभी ले लेते हैं इसको पूरा, 6:30 बजे तक लेंगे. Small intestine. So it is continuous from the stomach to the it will end with the large intestine. Okay, so it will continue from pyloric sphincter, and the small intestine is around 5 meters long, 2.5 centimeter. जो पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है राइट फ्रॉम योर इसोफेगस टू रेक्टम, सो इट इज अराउंड 12 फीट. हाउ मच? 12 फीट. ठीक है, 12 फुट रहता है, वो 12 फीट्स का रहता है एलिमेंट्री कैनाल. मतलब आपके गले से लेके आपके जब आप टॉयलेट में एक्टिविटी करते हो वहां से लेके वहां तक कितना लेंथ है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का? तकरीबन 12 फुट लेंथ है, 12 फीट्स. So small intestine has around 5 meters. It will small intestine will having length of 5 meters. ये एक बार पूछा था, 5 to 6 मीटर उसका लेंथ रहता है, 2.5 centimeter in diameter. It will end with the large intestine in the ileocecal valve. Now there are different parts of small intestine. First part is the duodenum, second one is jejunum, last one is the ileum. So this small intestine is divided into three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Remember, okay? So what is duodenum? It is a 25 centimeter long, and in this duodenum, so the content of liver, then pancreas, then gallbladder, they are poured in the duodenum. जो accessory organ होता है आपका digestion के लिए, जैसे liver हो गया, आपका pancreas हो गया, आपका gallbladder हो गया, तो इसका जो content होता है gallbladder से क्या आएगा? gallbladder से आएगा आपका सोडियम टॉरोपुलेट. बाइल जो होता है आपके gallbladder में, वो बाइल आएगा आपका गॉल ब्लैडर में से. पैंक्रिया में से क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस आएगा. लीवर में से जो भी जो पार्ट होता है वो आएगा. ठीक है, कहाँ पे आएगा? डिओडिनम में, यहाँ पे ड्रेन होगा. नाउ it has some opening known as a it is known as a hepatopancreatic ampulla. So in the duodenum part of small intestine, the content of pancreatic juice, then bile, it will be poured through hepatopancreatic ampulla. Remember ये word. And enters in the duodenum and duodenal papilla. Use of sphincter podi होता है. ये sphincter podi यहाँ पे होता है, वो ये sphincter podi ये क्लोज होने के बाद कंटेंट नहीं आएगा duodenum में, ओपन होने के बाद कंटेंट आएगा. Okay? Now next part is the jejunum. So it is a middle section of small intestine, just 2 meter long. Then last portion is ileum, 3 meter long. The surface area of small intestine is very large. Remember, surface area of small intestine is very large, and it is because of it is increased because of folding and refolding. That is circular folds known as villi and microvilli. So villi and microvilli are the minute folding of the intestine. Okay, so that's why this small intestine will offer a large surface area, and because of that most of the food is absorbed from small intestine.
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई विलाई होता है, दैट इज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोजल लेयर, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोजल लेयर, दैट इज अ फोल्डिंग एंड रिफोल्डिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज villi and microvilli, and most of the absorption occurs through these villi and microvilli. It was question in GPAT, it was a question in NIPOR also. ये रूटीन क्वेश्चन है GPAT नाइपर के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है. Absorption of nutrients occurs through these structures, and villi and microvilli also supplemented with lymph vessels. जहाँ पे lymph कलेक्ट होगा, मतलब जहाँ पे जो फैट्स absorption होगा villi microvilli में, वो ब्लड में जाने के बजाय lymph में जाएगा, ठीक है. और बाकी का जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है. सो रिमेंबर villi and microvilli, they will offer a large surface area because of folding and refolding, and they are finger-like projections in the mucosal layer of intestine. Now next one is a globulate cell. So as I have told you, globulate cell, they are present in all over the GIT, and they will secrete a mucus. Okay. So lining of small intestine is columnar epithelium, also known as enterocytes. So जो inner lining of जो inner see alimentary tract मैंने बोला है कि it is having 3 layers, outer fibrous layer or flexible layer, middle muscular layer, and inner secretory layer. So which has a columnar epithelium. Okay. So in columnar epithelial cells of intestine, they are known as enterocytes. And intestinal gland, numerous lymph nodes are also there in the intestine. Lymph capillaries are there. Lymph capillaries, they are known as lacteals. Lymph capillary present in the intestine, they are known as lacteals. Why? Because the lymph carried through lacteals, it is a white colored. जो फैट होते हैं वो white color के होते हैं, इसलिए they are known as lacteals. Now collection of lymph cells situated in the distal end of ileum, known as aggravated lymphatic follicle or Peyer's patches. ये अपने previous chapter में देखा है. So there are some aggregated lymphatic follicles in the stomach और GIT के एरिया में होता है. उसको बोलते हैं Peyer's patches. That will prevent the invading organism. Okay. So blood is supplied to intestine and GIT by mesenteric artery and intestine, whereas the blood is drained by mesenteric vein. कि mesenteric artery जो होता है वो GIT को blood supply करता है, और mesenteric vein जो है वो GIT से blood बाहर लेके जाता है. और mostly the stomach का जो एरिया है और intestine का जो एरिया है small intestine का, वहाँ से जो blood है वो एक another जो vein होता है उसको बोलते हैं portal vein, वहाँ से भी वो blood कैरी किया जाता है लिवर को. Now chemical digestion and intestinal content of chyme. So intestine में कौन सा कंटेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिओडिनम में आपका पैंक्रियाटिक जूस होगा, यहाँ पे आपका बाइल होगा, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस भी होगा, ठीक है. तो in the next slide we will see what is the components of pancreatic juice. Okay. So chemical digestion and intestinal content of chyme. Acid passes into small as the chyme passes into small intestine, it is mixed with the pancreatic juice, bile and intestinal juice. It is in contact with enterocytes of the villi and microvilli. So digestion of carbohydrate, protein and lipid takes place. तो जो pancreatic juice होता है उसमें lipase enzyme होता है, उसमें pepsin होता है, उसमें chymotrypsin होता है, proteolytic enzymes, उसमें carbohydrate digestion के लिए enzymes होते हैं. So they will break down and starch into smaller monomers, and from these microvilli and villi it will be absorbed. Different juice present in the intestine. Intestinal juice कितना होता है, 1500 ml intestinal juice होता है. So daily secreted by glands of small intestine, and the juice is alkaline in nature. So gastric juice is acidic in nature, intestinal juice is alkaline in nature. So इसमें intestine में pancreatic juice भी होता है. Now उसका pH होता है pH 8. It is a basic and pH 8 secreted by exocrine gland of pancreas. Now pancreas जो है, so it has a two functions, exocrine as well as endocrine function. So exocrine function of pancreas is to release the pancreatic juice in the duodenum, and endocrine function of pancreas is to release the hormones, that is insulin, glucagon, somatostatin and all that in the blood. So only gland in the body which has a
endocrine as well as exocrine function, that is a pancreas. Remember, एक ये नीट का क्वेश्चन होता है, नीट में भी ये क्वेश्चन आता है कभी, और अभी यहाँ पे भी आ सकता है. So pancreas is the only one gland which has a exocrine function as well as endocrine function. Remember. So along with this, this duodenal juice consists of pancreatic juice consists of water, mineral salt, enzyme like amylase, lipase, nuclease. Amylase means that will break down the carbohydrate. Lipase means that will break down the lipids. Nuclease means that will digest the DNA, RNA. And important inactive enzyme like trypsinogen, chymotrypsinogen. So ये जब basic pH होगा तो ये active होंगे और ये that will digest the proteins. Trypsin and chymotrypsin are the proteolytic enzyme. Now pancreatic juice will help in digestion of protein, lipids and fat. Okay, secretion of pancreatic juice is controlled by enzyme known as secretin, cholecystokinin, enzyme produced by endocrine cells of wall of duodenum. Now bile, secretion of gallbladder, that is a bile. Okay, bile secreted by liver. Okay, it is it is synthesized in the liver. Bile is synthesized in the liver and stored in a gallbladder. It has a pH of 8 and 500 to 1000 ml. Bile is produced daily. Okay, it is secreted daily. It consists of water, mineral salt, mucus, and bile salt. So, what are the bile salt? That is important. Sodium taurocolate and sodium glycocolate. Sodium taurocolate, sodium glycocolate, glycolic acid, glycolic acid. These are the constituent of bile salts. Okay, ये याद रखो, sodium taurocolate, sodium glycocolate, then glycolic acid, glycolic acid, then bile pigment कौन से होते हैं? Bilirubin, bilirubin. Okay, bilirubin and bilirubin. These are the bile pigment. It also consists of cholesterol. So it has a function of importance in the absorption of fats and water soluble, fat soluble vitamins and fatty acids. ये जो bile होता है, वो bile क्या करेगा? It will absorb the fat. It will emulsify the fat. So it will emulsify the fat. So it is important in the absorption of fat. So which component is helping the absorption of fat? That is a bile. Okay. So ये याद रखो. Then next one is the large intestine. So large intestine is about 1.5 meter long. Okay. ये GPAT 2008 में पूछा था question. So what is the length of large intestine? It is a 1.5 meter long. This question was in GPAT 18. 1.5 meter long is there. So it will begin at the caecum terminating at the rectum. जो कोकियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, वहां से बिगिन होता है और रेक्टम तक एंड होता है. Okay, so anal canal, deep inner pelvis. Now appendix is the one structure present in the large intestine. It is a fine tube containing more lymphoid tissue as it has no digestive function. ये जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स जब आप बच्चा पेट में होता है माँ के, तब अपेंडिक्स से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और जब डिलीवरी हो जाता है तो वो अपेंडिक्स काट देते हैं और वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है. तो अपेंडिक्स में क्या होता है? बहुत सारा लिम्फोइड टिश्यू होता है. Now colon has large intestine has three parts: ascending colon, descending colon, and sigmoid colon. Out of this, sigmoid colon is a S-shaped. Okay, these are the part of colon. The rectum and anal canal, जो short passage होता है last में, rectum 3.5 centimeter, 3.8 centimeter in the adult, that is the rectum. So it has a sphincter. So rectal sphincter is known as a rectal sphincter or anal sphincter. It is a under involuntary control in the children's. जो चाइल्ड्स होते हैं उसको इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, तो भी तो बच्चों को समझ में आता है कि कभी शी करना है, किधर भी कर देते हैं वो. तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो दैट कम्स अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल. So internal sphincter under involuntary control and external sphincter under voluntary control. Are you getting my voice or not? So this sphincter is used for defecation. जो भी बचा हुआ, जो भी useless debris है फूड का या फिर undigested food है, that will be removed from the rectum. So it is the last part of your digestive system. I will take a break of 5 minutes and then we will join again.